ओ ये क्या है? अरे किडनैप, ये क्या था? अरे ये तो वही गॉड है ना जो स्टार्टिंग में मिली थी हमें। पिछली वीडियो में हमने विलन से एक बहुत ही खतरनाक फाइट की थी जैसा कि देखा होगा आपने, एंड हमने उसको बचा लिया था। उसको जो ब्लड क्लॉट हो गए थे वो हमने निकाल दिया था कैसे ना कैसे करके बहुत ही हवा में फाइट हुई थी। एंड वो सब होने के बाद हम यहाँ आए थे एम्बर के साथ। एंड देखो एम्बर यहाँ पे काम पे जुटी हुई है एंड अभी हमें क्या करना है? अरे हाँ याद आया, हमें तो अब यहाँ पे जाना था, फूड वाले शॉप नहीं क्या, वो खाना वाना खाते वहाँ पे, क्योंकि हमें डिनर करना है एक बहुत अच्छा, क्योंकि हमने मॉन्स्टर को बचा लिया था इसलिए। सो देखते हैं आगे की स्टोरी क्या है एंड इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स मूव ऑन। हमें मॉन्स्टर में ही जाना है ना? हाँ देखो सीधा ही जाना है, चलो। वो लेकिन ये क्या हो रहा है यहाँ पे? पूरे कांटे वाटे शील्ड बीड लगा दी इन लोगों ने क्या सीन है यहाँ पे? इससे बात करूँ क्या? कुछ बोलेगा ये? चलो छोड़ दो, एम्बर बताई देगी बाद में। एंड जाने से पहले मैं एक दिखाना चाहता हूँ। आज सुबह जैसे ही मैंने लॉगिन की, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले, तो देखो मुझे क्या मिला। ये देखो 5th कैरेक्टर जो कि है बरबरा यो हाँ यही मिली हमें। एंड मैंने उसको अभी इक्विप भी नहीं किया क्योंकि मैं वीडियो में देखना चाहता था, जो भी होगा सीन। एंड मुझे क्या लगता है, देखो हम इसको यहाँ पे कर नहीं सकते, कोई तो 4 ही कैरेक्टर रख सकते लगता है हम, तो हमें किसी को तो रिप्लेस करना पड़ेगा तभी हम ले सकते। हाँ किसको करूँ रिप्लेस? मैं तो हूँ ही, एम्बर भी काम आती है बहुत ज्यादा। अरे हाँ लीजा को कर सकते हैं हम रिप्लेस, चलो लीजा को करते हैं रिप्लेस। ओए लीजा थोड़ी देर के लिए चली जा प्लीज I wonder when I'll be as tall as my big sister. मैं कैसे क्या करूँ इसको? अरे मैं कर नहीं पा रहा, अब क्या? अरे हाँ दिख गया मुझे, ये देखो कब से ढूंढ रहा हूँ मैं। तो हमें यहाँ पे जाना है, देखो ये यहाँ पे, एंड फिर पार्टी सेटअप पे, एंड यहाँ पे होते हैं वो। एंड देखो मैंने कर भी लिया लीजा को, तो डिप्लॉय करते हैं अभी। डिप्लॉयड। ओ बारबरा है इसका नाम। अरे ये मिले थे क्या हम बारबरा से? म्यूजिक की पावर है देखो इसके पास कोई तो। लेट्स डांस ओह सही है, चलो इसकी भी पावर देख लेंगे, अगर हमारी फाइट होगी तो इसकी भी देख लेंगे। चलो अभी तो कंटिन्यू करते हैं हमारी स्टोरी। बार हम मिले थे लगता है इनसे कहीं तो। और सोन कैसा चल रहा है हम फिर से आ गए देखो थैंक यू, यू आर मोस्ट थैंक यू। अच्छा इससे बात करनी है हमें। Here we go. This is it. क्या हुआ? Crisis, danger, the thrill of adventure. किसके बारे में बात कर रहे हैं? Adventurers Guild. Finally, our days of rescuing kittens and finding lost puppies are over. Oh. The age of adventure is upon us. कैसा बोल तो? Roll up, youngsters. Join the Adventurers Guild today. In this time of great upheaval, we must rally together, take on the dragon, and save our great city of Mondstadt. हाँ हम बचाएंगे, लेकिन किसके बारे में बात कर रहे हैं? What? What? नहीं पता मुझे। The Storm Terror threat is resolved? Yep. I missed the acting Grandmaster's speech? ये देखो सब कुछ हो गया एंड इसको कुछ पता भी नहीं चला अभी तक। Storm Terror should have put up more of a fight. We didn't get to join. कोई नहीं, आगे बहुत खतरे आने वाले हैं, इसके लिए तो तैयार रहे अभी से। एंड देखो ये अपडेट के बाद ये भी हो गया, देखो हम बात करते करते ऐसे कैरेक्टर को मूव भी कर सकते। कैसा आदमी है ये, इसको कुछ पता ही नहीं चला है। अब ये कौन? और एक सिपाही, इसको तो कुछ पता होगा ना? Long live the heroes. अच्छा हाँ Thank you. It's finally over. हाँ इसको पता है सब, ये सही है। Many trade routes have closed due to the storm terror incident. We can cope for now without fresh fruit and vegetables. But if the wine supply dries up, we're all doomed. क्या वाइन चाहिए इसको? I cannot imagine a world without wine. इसको बहुत वाइन चाहिए लगता है। I hope they get the trade routes back up and running soon.
ओके आ जाएंगे ट्रेडर, कोई नहीं, मैं ला के दूं क्या, बोल जल्दी। सब कुछ ठीक चल रहा है यहाँ पे। एंड ये कौन अब? हेलो ग्रेस, व्हाट इज हैपनिंग? So Storm Terror's true identity is Villan, यप one of the four winds. We never should have forgotten his past sacrifice for Mondstadt. अरे कुछ नहीं किया डिवालिन ने, ठीक हो गए सब। Every cloud has a silver lining. We're fortunate that our relationship with the Dragon of the East didn't sour past the point of no return. यप For that, we have you to thank. And Jean for her unfailing devotion. अरे कोई नहीं, हम करते रहते हैं ऐसे। As long as we have the Knights of Favonius, peace and freedom will prevail in Mondstadt. यप ऐसे ही फ्रीडम के साथ जीते रहो सब लोग। अच्छा ये सब लोग बधाई दे रहे हैं हमें क्योंकि हमने मॉन्स्टैड को बचा लिया ना, इसलिए। एंड फाइनली आ गए हम सारा के पास। ये देखो। Greetings. May I take your order? अरे हमें ना। Why so cold? I've always thought that we enjoy quite the intimate friendship. ओ ये I didn't see you there. The handsome mister क्या? मैंने देखा। Ah, so you do feel something for me. And people say my charm is fake. To bask in the presence of Mondstadt's new big hero is quite the morale boost. And that's coming from a knight. ये भी सही है। Sweet talking, sugar-coated Captain Kaya. ओह कैप्टन है ये। Nonsense. I speak from the heart. Okay, so what are you doing here? What are you plotting this time? What are you plotting this time? तू क्या कर रहे क्या यहाँ पे? Just looking for a quiet spot to collect my thoughts. कौन से thoughts? While all the other knights are working hard to clean up after the battle? Thinking can be an arduous task, you know. Believe me, I'd much rather be taking out the trash. Oh. So what you thinking about then? The Abyss Order. Abyss Order? अरे हाँ, एम्बर भी इसी के बारे में बात कर रही थी। A dragon wreaks havoc in Mondstadt, and the acting Grand Master leaves the city to combat the threat. Strategically, that's the perfect moment for the Abyss Order to make their move. ओह हाँ, ये भी है। If you were the Abyss Order, would you squander this golden opportunity by sending in nothing more than a few hilly churls? You are right. It doesn't add up. There must be more to this story. You are right, Kea. To get to the bottom of it, I decided to wait. So I waited and watched for their next move. Oh, ये इंतजार कर रहे हैं उसके मूव का। Then came the day you made all hell break loose in Storm Terror's lair. Just as the hilly churl's cries sounded from the city gates. That same day, I saw shadowy figures lurking in the city itself. Oh, इसको क्लूज मिलने चालू भी हो गए। Inside the city? ओह, I mean मॉन्स्टैड में भी आ गए वो? Well, all the other knights were outside, fighting the enemy. As you can imagine, that left the inside of the city completely unguarded. ऐसे कैसे चलेगा लेकिन? Except for me, of course. And so I approached the Abyss Order infiltrators for a bit of, let's call it fraternizing. Okay. Through various means, I managed to gather some rather interesting intel. तो क्या मिला इसको? I mean, The situation is this. The Abyss Order, they are united under a single leader. सिंगल लीडर। मुझे लीडर ना वही लग रही मेरी सिस्टर क्योंकि वो डेवालिन को उसी के पास लेके गया था। The Abyss Order has a leader? हाँ। Yes. And it was this very leader who devised the plot to turn Villan into a weapon of war. हाँ वही ना। What exactly did you have to do to find this out? Let's just say I'm blessed with certain linguistic powers. Linguistic power, ये कौन सी power है? There's more. The Abyss Order has a name for this leader. They call her the Princess. ये देखो मैंने बोला ना प्रिंसेस है ये, वो हमारी सिस्टर ही है क्योंकि उसका फर्स्ट लुक देखा था हमने। Now, I'm sorry to cut this intelligence briefing short, but I do believe I spy Amber heading this way. आ गई क्या वो? I think she's still angry with me for my absence from the defense effort during the attack. I'd better slip away before she notices me. ओके चलो, ये डर रहा है एम्बर से। एम्बर हमें
बहुत अच्छा खाना खिलाने वाली थी। One minute I see Kaya, the next he slipped away. Clear sign of a guilty conscience. वो भाग गया डर के। He does a lot behind the scene. I know what is scounded. I know what is scounded. अरे हाँ, इसको क्या क्या किया इसने वहाँ पे? I agree. He sets a terrible example for someone who's cavalry captain. But let's forget about him. I worked super hard today and my tummy's rumbling. Okay. Let's order. चलो खाते हैं कुछ तो। Hi Sarah. One sticky honey roast, please. स्टिकी हनी रोस्ट, ये क्या है? चलो बैठते हैं एंड खाना खाते हैं। तो हमें यहाँ बैठ के खाना खाते खाते बातें करनी है। कांट टेल। Today's ये क्या था? recommendation is the steak. ये क्या है? अच्छा मैसेज बोर्ड है यहाँ पे कोई। चलो बैठ के बातें करते हैं पहले। So, now the storm terror threat is behind us. What are your plans for the next step? पता नहीं, बस इधर उधर घूम रहे हैं हम लोग। Paimon thinks it's time to leave Mondstadt Oh. and keep looking through the 7 nations until we find clues about his sister. अरे हाँ, 7 नेशन है ना। और एंड वो सिस्टर हमारी ही सिस्टर थी, वो जो स्टॉर्म टेरर के साथ थी। Huh, really? Oh, well, I guess this is goodbye for now. I will miss Mondstadt. I will miss my for वो Mondstadt को भी मिस करेंगे एंड जो हम मेंबर्स मिले थे सबको मिस करेंगे। तो क्या चूज करो अभी? दोनों तो चूज नहीं कर सकते। चलो यही कर देते हैं। Hey, don't feel down. You'll always be a friend of the Knights of Avonius. Yes, yes. And our honorary knight. Wherever you may go and wherever the winds may blow. Yes, let the wind lead. I will come back and visit. हाँ, हम आते रहेंगे। That's the spirit. Remember, Mondstadt will always welcome you. Yes. All right, now let's eat before it gets cold. क्या है खाने में? You enjoying a relaxing meal time. That was good. Note to Paimon, Amber's recommendations are worth the wait. क्या खाया इन्होंने? नाम भी नहीं बताया। Of course. Well, I don't trust myself in the kitchen. You can always trust me with the menu. हाँ, वैसे मेन्यू तो सारा का ही है ना। Oh, I almost forgot to mention. क्या? Jean's waiting for you at the cathedral. It's something to do with the Holy Lyre de Himmel. You'd better head there now. ओके चलो फिर। The steak. जीन के पास जाना है अभी। है एम्बर गायब भी हो गई इतनी जल्दी। मीट जीन एंड विजिट एट द कैथेड्रल। हम सीधा टेलीपोर्ट करते हैं ना वहाँ पे। ये देखो यहाँ पे। फिर यहाँ से वहाँ पे। अरे मॉन्स्टैड को छोड़ के जाने के बाद कहाँ जाएंगे हम अब? एक बार मैप देख लेते। पता नहीं कहाँ जाएंगे। चलो पहले तो कैथेड्रल चले जाते। मीट जीन एंड वेंटी। अच्छा वेंटी भी है यहाँ पे। मुझे लगा चली गई वो। ये कैथेड्रल में क्या कर रहे हैं वैसे? सारे प्रॉब्लम्स तो चली गई ना। अब क्यों आए हो यहाँ पे? अच्छा बारबेरा यहाँ पे the है। deaconess of the church. She is here to retrieve the Holy Lyre de Himmel. May the Animo Archon protect you. Yes, yes. I'm not really in a position to speak compared to our acting Grand Master, कोई नहीं, बात कर ले। but I still want to thank you all on behalf of all of Mondstadt for your assistance. Yes, you are most welcome. Fortunately, everything was resolved peacefully. I can't imagine how an all-out war between the military and the dragon would have ended. लेकिन कोई नहीं, खत्म हो गया सब। Now the Fatui have no choice but to keep their mouths shut. They must be annoyed that things didn't turn out as planned for them. This time, they even lost their best excuse to pressure the Knights of Favonius. Yep. Diplomatically speaking, they gained nothing, and on the contrary, simply proved just how vexatious they can be. Okay. Sounds like quite the story. So, did you bring the Holy Lyre with you? कौन? वेंटी को पूछ रही है क्या? We cannot ask you to keep defending the lyre forever. The Seneschal has been pressing me for a while now. मुझे बोल रही है, मैं होली लायर लेके क्या करूँगा? अगर ये वेंटी के पास होगा तो वो बजाएंगी कुछ सॉन्ग्स। We did bring it with us. It's a little. Little what? Oh, don't worry. I'm not here to collect rent. The church has always received special funding. Yep. Oh,
क्या हुआ? अच्छा तोड़ दिया। The holy liar! Lord Barbados! Even if I atoned for these sins for the rest of my life, it would still not be enough. अरे Oh, give it here. अरे हाँ, ये ड्रैगन के टाइम पे टूट गया था ना। ओ रिपेयर कर रही है सच में। How could this holy liar, but how? Huh? Let Paimon see. No, no. I don't know how you managed to fix it, but you'll never touch the liar again. अरे हमने नहीं तोड़ा था, वो ड्रैगन ने तोड़ दिया था। We really should get going. That trick I used to repair the holy lyre. I mean, the magic I used Huh? isn't going to hold forever, you know. अच्छा चलो भागो फिर। Hey, don't go! भागो। ओ ये क्या है? अरे किडनैप। ये क्या था? अरे ये तो वही गॉड है ना जो स्टार्टिंग में मिली थी हमें। At last, Mondstadt's rodent ruler in the flesh. अरे नहीं वो देखो मैजिशियन, ये दूसरा है। Scurrying through the streets looking for leftovers. Mondstadt calls this a god? Resident rodent beats invasive vermin. अरे नहीं प्लीज मारो Don't you मत। dare speak back to me, insolent bard. Absentee Archon of Mondstadt. How impotent you've become. That smirky wear looks out of place. Did you steal it from your master's face? Should have held your tongue. अरे नहीं। So, this is a gnosis. Wouldn't be caught dead wearing this ugly thing in public. अरे ये क्या कर दिया इसने? Waste when the beholder has no taste. नो क्या था वो, क्या ले लिया? Well, we have what we came here for. Come, before our dear Favonian friends arrive. Leave nothing for them to find. अरे पायमन कहाँ गई? Honorary Knight, you're awake. यप, क्या हुआ पता नहीं, कोई तो खतरनाक मॉन्स्टर आ गई। वेंटी, हाँ वेंटी कहाँ पे है? I wouldn't say he's all right exactly. क्यों, क्या हुआ? I found you lying unconscious outside the cathedral and used my elemental powers to heal you. एंड वेंटी? That bard awakened first, but strangely, my healing powers had almost no effect on him. This is the first time I've encountered such a patient, but he just said it's completely normal, and then got up and left the cathedral. नहीं, कहाँ पे चली गई है? He left? Already? Where'd he go? The symbol of Mondstadt's hero. That's what he said. अरे हाँ ट्री था वो कोई बड़ा। I wanted to stop him, but Jean, I mean, Master Jean, said to let him leave. How strange. हाँ आई थिंक जीन अंडरस्टैंड, आई थिंक हाँ पेड़ के पास गई वो। Paimon remembers Venti हाँ, healing वही ना। under that tree before. वही ट्री, मैं भी वही बोल रहा हूँ, बड़ा सा पेड़ है वो। It's probably due to the connection between Windrise and the Animal Archon. Master Jean has figured it out as well, but we can't tell Barbara. सुन लिया होगा उसने। चलो चलते हैं हम। एंडिंग नोट, बारबारा हम बाद में मिलेंगे। अरे ये कौन था, कैसी एंट्री हो गई बीच में? स्टैचू ऑफ द सेवन टेलीपोर्ट। वेंटी ये क्या हो गया? What happened? The wind amongst the branches is good. I love the way it smells. I said the exact same thing last time. हाँ वही ना, वही।
Why do I only say these things when I'm down on my luck? अरे हाँ, उसने लिया वो क्या था, जिनोसिस। So you noticed. यप, हमने देख लिया। This isn't something I'm meant to discuss with ordinary people. But I suppose I can let you in on the secret. यस यस, बता दे प्लीज, हम हेल्प करेंगे कोई ना कोई। As you know, visions are external magical foci that only a small minority of people possess. They use these visions to channel elemental power. ओके। In truth, every wielder of a vision is one who can attain godhood and ascend to Celestia. We call such people allogenes. हैं, कुछ समझ नहीं आया। Allogenes? Paimon's never heard of them before. किसी ने नहीं सुना। That's because this is a secret that only Archons are privy to. We don't need primitive tools like visions. ओके, समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। Instead, each Archon has an internal magical focus that resonates directly with Celestia itself, known as a gnosis. Gnosis, okay. What about the thing hanging off your hip? Huh? It's just a glowing glass ball I carry around to avoid suspicion. I feel cheated, but I guess I am used. Huh? So who was that nasty woman who sent Paimon flying and stole your gnosis? Her name is Signora, number 8 of the Harbingers. Oh, Harbingers है वो। She and the rest of the Harbingers have been given godlike executive authority by the Tsaritsa of Snezhnaya, and with it, strength surpassing that of other mortals. Okay. The Tsaritsa of Snezhnaya? Isn't that... हाँ वही। Indeed. She is one of the 7, the Tsaritsa who reigns from her winter palace, and the one person that the Fatui Harbingers all answer to. Okay. The 7 don't always get along well, but still. I never thought that she would plot to steal another Archon's gnosis. अच्छा, मीन्स सबके पास एक एक gnosis होता है। What sort of god is a ये? How should I put this? कैसे भी बता दे। 500 years ago, I knew her well, but I can't say the same is true now. क्यों? कैसी थी फिर? You see, a certain catastrophe happened 500 years ago, and after that, she cut off all ties with me. Oh. But we can save discussion of the Cryo Archon and the Fatui for another day. Okay. If you seek the rest of the 7, many difficulties lie ahead of you still. Okay. You should head for Mondstadt's neighboring nation of Liyue. The Geo Archon who reigns there, unlike me, administrates his entire region personally. Oh, I hope अच्छा हो वो जहाँ पे जा रहे हम। He only descends once every year to give his divine predictions, which set the direction for Liyue for the rest of that year. Oh. Even so, it sounds like he works much harder than a certain someone. In any case, this year's Rite of Dissension is soon to begin. If you miss it, you'll just have to wait another year. कोई नहीं, हम चले जाएंगे। What? Oh, why didn't you tell us before? Well, then bye. We're going. Yes, we are going. One moment, Windborn Outlander. Huh? You mean me? Sorry for borrowing the statue. You mean me? Yep. क्यों? Traveler, as you set off on your journey once again, you must remember that the journey itself has meaning. Okay. The birds of Tevat, the songs in the cities, the Tsaritsa, her Fatui and the monsters, they are all part of your journey. Yep, समझ गए हम। The destination is not everything. So before you reach the end, keep your eyes open. Use the chance to take in the world around you. Venti, don't Great. worry. So that's that for the Animo Archon's admonishments. Back to Venti time. Back to Venti time. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. About Dwellin, about Abyss Order, about Singora. Nah, there is nothing else. Well then, best be off to Liyue. If the dissension ritual you failed to tally, then another year you must dally. चलो हमें जाना है पहले ही। सॉन्ग ऑफ द ड्रैगन कंप्लीट हो गया हमारा। ओ खुल गया कुछ तो। अच्छा, डोमेन खुल गया।
ओके एंड इसी के साथ हमारा सॉन्ग ऑफ द ड्रैगन, ये जो प्रोलोग्ड एक्ट 3 था, ये कंप्लीट हो गया है। एंड अभी क्या क्वेस्ट, कौन सी क्वेस्ट? अच्छा ये तो नहीं चल सकता अभी, ये चल सकता है। देखो वुल्फ टेरिटरी आर्कन, ये स्टोरी क्वेस्ट भी अच्छी होती है, जैसे कि हमने लीजा की थी पिछली बार। एंड इससे पहले मैं ये करना चाहता हूँ ये देखो पिछली बार हम आए थे, याद होगा कि नहीं पता नहीं, बहुत टाइम पहले, तब ये ट्राई किया था हमने करने का। उसके लिए हमें पार्टी चेंज करनी पड़ेगी। इसको डिप्लॉय करते हैं एंड बूम इसके लिए ये देखो, इसको लीजा चाहिए ना, इसलिए बस हो गया। एंड अभी एक ही बचा है। अरे अरे मैं जंप की थी, हुई नहीं जंप, यहाँ पे किया होगा। एंड देखो अब अरे चेस्ट है ये नॉर्मली मुझे लगा कोई अच्छा कुछ मिल जाएगा, प्रीशियस चेस्ट मिल जाए कम से कम। हाँ सही है। ओके तो हमें, अच्छा ये डार्क नाइट ये भी मिल गई क्विस्ट, एंड ये भी है। अच्छा ये तीनों स्टोरी क्विस्ट है ये कमीशन तो करते रहते हैं हम। इसको चाहिए 23 एंड हमारा 22 है, मीन्स हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और ये डोमेन्स भी बहुत सारी है, डोमेन्स भी करने हैं अभी तो। चलो ये स्टोरी क्विस्ट करते हैं। वुल्फ टेरिटरी आई मीन मॉन्स्टर में है लगता है ये। अरे नहीं मॉन्स्टर में नहीं है, यहाँ पे है टेलीपोर्ट अरे हमें नया कैरेक्टर मिला था ना, बारबरा को लेंगे हम थोड़ी देर के लिए अरे यार लेकिन लेवल 1 ही है ना, ये दिक्कत है, जल्दी ही मर जाती है बारबरा तू आजा, बारबरा मैं नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ या पता नहीं। व्हाट इज दैट? पाइमन is Wolvendom. People from Mondstadt hardly ever come here. क्यों, ऐसा क्या है यहाँ पे? Even though it's not so far away from the city, the environment here is totally untouched. It's a wild place ruled by the laws of nature. Okay. It's survival of the fittest out here. Even the slimes around here are huge. Like those super duper massive ones over there. हाँ कितना बड़ा है ये। चलो मारते उसको। अरे जल्दी से हो जा, मारते हैं। ये देखो बार की पावर। अरे बार की हेल्थ ज़्यादा नहीं है ना, इसलिए नहीं बार को बाद में लेंगे। अच्छा यहाँ पे ये घूमते रहते, इसलिए कोई आता नहीं यहाँ पे। हाँ ये को और आ गए ये तो ओ बड़े हो गए, कुछ ज्यादा ही बड़े ये कौन? लीजा ही लग रही है, या फिर न्यू कैरेक्टर फिर से। ओह न्यू कैरेक्टर। हेलो, हु आर यू? Thank you. वुल्फ नहीं, वुल्फ नहीं वो। Do not worry, wolves, friends. But you are? I am Distro. I am Outlander. We're just some boring old travelers passing through. Don't smell boring. You smell familiar. खाने वाला ही लगता है हमें। We smell? You smell like Knights of Favonius. They are friends. Yep, हम फ्रेंड्स है। And what is your name? Are you also Knight of Avonius?
क्या तुम भी नाइट हो एक? I am Razor. I am no knight. अच्छा रेजर है ये। Oh, वुल्व वुल्व है वो। My wolf pack. They are my family. ये वुल्व है फिर बात कैसे कर सकता है? your family? Yes, they raised me. We live together. We are family. अच्छा ये वुल्व नहीं है लेकिन वो फैमिली वुल्व है इसकी। So many questions. They are angry with me. I helped you. Exposed our ambush. Boar ran away. कोई नहीं हम किसी को नहीं Don't बताएंगे। worry. Paimon will get her friend to catch you another boar. He's stronger than he looks. यप No need. When knights try to help, wolves go hungry. क्यों? Don't be silly. Wait here. We won't screw this up. Just watch. अरे हम पे भरोसा करके देखिए एक बार, हम कर लेंगे। ओपन द इन्वेंटरी एंड हंटिंग ट्रैप टू ले डाउन। अच्छा ट्रैप बिछाना है हमें, एंड अगर वो फंस गया तो फिर सही है। समझ गया हम हमें ट्रैप बिछाने हैं यहाँ पे। सो बस गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने मॉन्स्टर में जाके मस्त डिनर किया एंड उसके बाद में थोड़ी मस्ती की एंड अचानक से एक खतरनाक विलन ने एंट्री कर दी। वो भी एक हार्बिंजर्स है, हार्बिंजर्स ही बोला था ना उसने वेंटी ने। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया तो सॉरी फॉर दैट। एंड वो बहुत ही खतरनाक है एंड वो कुछ तो कर रही है। उसकी कुछ फॉलो करने के लिए हमें 23 चाहिए। तब तक हम इस वुल्फ की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। आई मीन सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।